हेलो एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग गाइस। आज हम किया के शोरूम में हैं, लेकिन ब्रसल्स वाले। सो आई एम इन बेल्जियम राइट नाउ एंड आई हैव कम हियर टू द किया शोरूम टू चेक आउट द न्यू EV6 फॉर यू गाइस। बहुत लोगों के कमेंट्स आ रहे थे तो सोचा इधर अवेलेबल है, जाके वीडियो बना देते हैं। सैडली इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और राइट साइड में गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो आई वोंट बी डूइंग द टेस्ट ड्राइव and even they are not available to do it, so I'll just do a walk around, small walk around for you. Won't be discussing a lot of things क्योंकि already बहुत सारे videos हैं. Some things might differ in the Indian variant and the European variant for sure. यहाँ पे टायर का radius 20 दिखा रहा है, I guess India में 19 है. That is one difference that I saw, but there will be many things which may be different in this one and the one in India. तो मे बी आपको ये भी पता चल जाए कि यूरोप में क्या मिल रहा है और इंडिया में क्या मिल रहा है. Alright guys, this is the new Kia EV6. तो अभी ये वीडियो बनाने के लिए इंडिया में तो हमको गाड़ी नहीं मिल रही थी बिकॉज एज यू नो टेस्ट ड्राइव्स का इशू है. हम आज हैं ब्रसल्स में किसी काम से एंड वी प्लान टू मेक दिस वीडियो. नेचुरली ब्रसल्स में है तो ड्राइव नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट आपको वॉक अराउंड दे सकते हैं, हमारा व्यूज़ बता सकते हैं. ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपने पता नहीं नोटिस किया क्या नहीं, अभी मैं जस्ट गाड़ी के साइड से पास हुआ था तो गाड़ी ऑटोमेटिकली अनलॉक हो गई है. दिस इज़ वन request sensor feature and the handles pop out when the car is unlocked, और लॉक होते ही ये हैंडल्स वापस अंदर चले जाते हैं और एक बार या तो आपने गाड़ी खोल के अंदर बैठ गए तो वापस अंदर चले जाते हैं. so that's one cool feature and you see I moved away from the door and it locked on its own. From the side I would say this is one of the most beautiful looking Kia car in the market, especially India में. यहाँ पे और भी बहुत सारी खड़ी हैं which are not available in India right now, but this is one of the most beautiful looking car. Look at the rims, amazing design of the alloys and big ones, मतलब ground clearance के हिसाब से बहुत अच्छा है. and R20 है तो you can imagine. Car is available in all wheel and rear wheel drive. These lines and these designs that they've made, like, simply outstanding. The designers, yeah, hats off. Kia EV6 designers, you've done an amazing job. Guys, the headlights and everything is amazing. Like, you know, the look at the grille design and you can see up front यहाँ पे एक कैमरा है. ऑटोनोमस फीचर्स हैं, कितने लेवल तक है वो तो जब ड्राइव करेंगे तभी पता चलेगा. We're just checking out the car here right now and you can even see the sensors here on top on the windshield for autonomous driving. So I guess lane assist and everything is there for sure. उसके आगे और कौन से फीचर्स हैं वो देखने पड़ेंगे. Look at the design of the rear view mirror guys. ये जो very unique design, it does have a blind spot detection in it. Okay, let's open the trunk now. थोड़ा सा reach बहुत ही नीचे है इसका, but single touch sensor है and look at that guys. It's deep. It's very deep. There's a light here on the side and there's a power socket here. So you can also drop down both the seats. 60-40 split में 60% drop कर सकते, 40 या पूरा का पूरा 100%. and it's 1300 liters of boot space. Can you imagine that guys? 1300 liters को एक्सेस कैसे करेंगे? वो सबसे बड़ा सवाल आपके मन में होगा कि ये सीट कैसे गिरती है. तो this is the thing guys. This is something different again. इसको आप खींचोगे और सीट ड्रॉप हो जाएगी. Similarly यहाँ पे if you want to drop the seat, नॉर्मली आगे का अगर दरवाज़ा खोलो, बटन खींचो और सीट नीचे गिराओ या आगे से कुछ लीवर होगा उसको खींचो तो सीट गिरती है. इसमें इन्होंने पीछे ही दे दिया. अगर आपको लग रहा है कम पड़ रहा है, यहाँ से लीवर खींचो और सीट नीचे गिर जाएगी. सिंपली आउटस्टैंडिंग व्हाट किया इज डन हियर विद द बूट स्पेस एंड यू प्रेस दिस बटन टू क्लोज द हुड. And before I move ahead and get into the car and tell you all the features which this key has, this is how the key looks. ये लॉकिंग अनलॉकिंग एंड डिक्की खोलने का वगैरह सब ऑप्शंस यहाँ पर है. these options आई एम नॉट श्योर ये क्या करते हैं, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा. बट द एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट अवेलेबल टू एक्सप्लेन मी ऑल दोज थिंग्स.
तो अगर पता चला तो आपको ज़रूर बता देंगे। Alright, now let's get into the driver's seat. All I have to do is either stand here or even there's a sensor here. तो अगर मैं यहाँ पे उंगली लगाता हूँ तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है and there's no button, it's just a tap sensor. Organic seats, guys, like even the seats are organic. They've tried to be as eco-friendly as possible, like the design of the headrest here. I'm sure it makes a difference. It looks very comfortable and the console looks amazing, simply amazing. Look at the screen size and the steering wheel. थोड़ा सा sporty feel दिया है with the bottom cut. Electronically adjusted seat, guys. तो आगे पीछे करना है, जो भी करना है, all that. And plus you can even save your settings. One amazing thing that happens is like whenever you open the door of the car, seat पीछे हो जाती है और जैसे ही आप उसको बंद करते हो तो आपको देखिए सीट वापस जो आपने सेटिंग सेट किया उस पर आ जाती है. Then I'll just go inside and sit and show you what I meant. तो अभी ये fully back है सीट. पता नहीं आपको समझ आएगा कि नहीं. जैसे मैं दरवाज़ा बंद करूँगा सीट आगे आना शुरू हो जाएगी. आपको मेरे लेग के मूवमेंट और बैकग्राउंड साउंड से समझ आ गया होगा कि सीट एडजस्ट हुई है. मैं एक काम करता हूँ, इसको एकदम ही आगे ले लेता हूँ. अभी लुक एट द किया लोगो. नाउ एज सून एज आई ओपन द कार, सी आई एम ऑन माई ओन गोइंग बैक so that it becomes easy for me to get out of the car. So this is one amazing feature and ये इशू बहुत बार आता है मुझे स्पेशली, क्योंकि मैं एकदम पीछे सीट रख के बैठता हूँ तो उस टाइम पे कोई और वाले ने गाड़ी लिया रहता है तो उस टाइम पे सीट एडजस्ट करने के लिए सीट एकदम आगे होती है, फिर बैठने के लिए प्रॉब्लम होता है. तो इसमें एटलीस्ट ऑटोमेटिकली पूरा पीछे चले जाता है ताकि आप बैठिए और फिर बंद होने के बाद में सीट अपने आप आगे आती है. So that's one amazing feature and on the display you can see indicator is there for the door open and close. चलो अभी गाड़ी को शुरू करते हैं. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई लाइक द थिंग दैट यहाँ पर उन्होंने फिजिकल वॉल्यूम कंट्रोल बटन दिया है और ये लाइट्स जो ब्रीदिंग लाइट्स यहाँ पे दी हुई है, दे मेक इट लुक अमेजिंग. इवन द कप होल्डर्स में ये लाइट्स है वगैरह, तो दैट लुक्स अमेजिंग. अभी के लिए तो मैंने सिर्फ पावर बटन दबाया है. आई हैव नॉट स्टार्टेड द कार येट. इट इज़ लोडिंग ऑल द डेटा. देयर इज अ मैप हियर, यू कैन सी देयर इज अ मैप हियर. आई प्रेस्ड इट and map is open. I go back to the home screen and it's as good as a tablet. All the details are here for you, like Kia Live is, I don't know, Kia Connect है and there are different modes. Valet mode यहाँ पर ही दिया गया है ताकि valet ये गाड़ी को valet के पास जब आप दो तो उसको misuse नहीं करे. So you can put all those settings in there and the media and everything settings and all. Now let's start the car. ओके तो लेन असिस्ट तो है गारंटीड, क्योंकि यहाँ पे वो दिखा रहा है सब डिटेल्स. एंड एज वी सीन इन टेस्ला एंड मैनी अदर कार्स नाउ, वॉल्वो में भी देखा था कि यू कैन सी ऑल दी अदर डिटेल्स हियर ऑन टॉप, लाइक ड्राइविंग एंड यूर इन पार्किंग मोड एंड सब हाईवे रिलेटेड जो भी वार्निंग्स आती हैं वो सारे यहाँ पे. द स्पीड हियर, देयर इज रेंज हियर. नाउ द कंपनी क्लेम्ड रेंज इज 55 किलोमीटर गाइज. ये तो 316 किलोमीटर दिखा रहा है. एंड द बैटरी लेवल इज अराउंड 69% हियर. लेवल 3 ऑफ रीजन, तो रीजन भी आप एडजस्ट कर सकते हो. एंड इट कैन डू 0 to 100 किलोमीटर इन जस्ट 5.2 seconds. इमेजिन द पावर दिस कार हैज गाइज. लाइक amazing stuff. Kia has really outdone themselves with this one. Okay, the car is powered by 77.4 kilowatt hour battery with the ability to charge the car from 10 to 80% in just 18 minutes, guys. वो naturally वैसा चार्जर होना चाहिए उतना पावरफुल ताकि वो इतनी जल्दी चार्ज हो. But then 77.4 kilowatt hour battery is huge and that's why the claim range is also big. We'll have to see actual on-road range कितना आता है इस गाड़ी का. ये बटन फॉर लाइट एडजस्टमेंट एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स इज हियर. एंड इफ यू कैन सी, आपको अगर चार्जिंग के लिए आपका लिड ओपन करना है तो उसका बटन भी यहाँ पर है. लेट्स सी द लिड नाउ. तो चार्जिंग लिड ओपन होने के बाद में ऐसा कुछ दिखता है. यहाँ पे ये ऑलरेडी चार्जिंग कितना है गाड़ी का दिखा रहा है. दैट इज सिंपली अमेजिंग. लाइक वेरी MG में भी वैसे ये फीचर आ गया, लेकिन एकदम ही प्रॉपर वो फोन्स में होता था पहले, वैसा बैटरी इंडिकेटर दिया हुआ है. एंड दिस CCS2 चार्जर अपना जो रेगुलर होता है. ओनली थिंग हियर इज़, जो मैंने आपको 10 to 80% चार्जिंग के बारे में बताया था, उसके लिए आपको 350 किलोवाट आवर चार्जर की ज़रूरत है, तब भी वो गाड़ी उतना फास्ट चार्ज होगी. सो
It takes the highest speed of charging in the market right now, especially in the Indian market right now. So that's simply amazing. और लिड को बंद कैसे करते हैं? ये बटन दबा के बंद करते हैं. And like small details makes it more premium. There's auto hold here. There's parking sensors on off करने के भी हैं. ये कैमरा 360 कैमरा ऑन करने का बटन है. Let's try and start it, and you can see 360 view is here on the screen. And now it's off. Nice big screen layout is making it look very futuristic. ये पार्किंग सेंसर्स वगैरह अगर आगे का पीछे का कुछ आपको करना है, you have your wireless charger here, decent enough storage space here, cup holders here with a key holder also here, like you can a space to keep key or something else on the side, on the back. Here you can see a USB and a USB-C outlet, mostly for charging your phones and everything. एंड्रॉयड ऑटो वायरलेस है. अभी ये यूरोपियन वर्जन में देख रहा हूँ, मे बी इंडियन वर्जन में देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो इन देयर. ऑटो डिमिंग मिरर विच इज स्टैंडर्ड बेसिक एवरीवेयर. लाइट्स आर हियर एंड looks amazing. The whole car, the seat feels amazing, and not joking, comfort level is actually very, very, very good. We do have a sunroof, but it is not panoramic, but doesn't matter. Sunroof hai at least. Electronically adjusted seats on the passenger side also. That's also something unique which this car has. There's place to put things here also. तो यहाँ पे आप bottles वगैरह सब कुछ रख सकते हो. And there are chargers here also. Like 12-watt charger है. And plus a USB-C charger again here. Enough charging outlets here in the front. Now let's get into the back seat. Back seat is the main thing. Especially अभी आगे का seat मेरे हिसाब से adjusted है. तो देखते हैं. लेग थोड़ा ज़्यादा रेज्ड अप है, बट आई हैव इनफ लेग स्पेस टू स्ट्रेच आउट, तो दैट डजंट मैटर. एंड यहाँ पे थोड़ा मैगजीन्स वगैरह रखने के लिए जगह है. ओवरऑल अ वेरी स्पेशियस कैबिन. देयर आर एसी वेंट्स हियर ऑन द साइड, दैट्स वन गुड टच. उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे साइड में USB-C पोर्ट दिया गया है दोनों सीट के, विच इज़ अनदर गुड थिंग. पीछे वालों के लिए एक इनोवेटिव जगह है. और बहुत टाइम ये जो पीछे का चार्जर का लोकेशन थोड़ा अजीब हो जाता है लोगों की यूज करने के लिए. दिस इज लाइक राइट देयर नेक्स्ट टू द होल्डर. अनदर गुड थिंग हियर व्हिच इज सेगमेंट फर्स्ट इज द बैक सीट्स आर आल्सो वेंटिलेटेड, सो दैट्स समथिंग कूल जो अभी तक इस सेगमेंट में देखा नहीं है. ओवरऑल अ वेरी स्पेशियस कैबिन. इफ यू सी देयर इज अ आर्मरेस्ट हियर विद कप होल्डर्स. Cabin is good and window size is also pretty decent enough. So the view outside is also pretty good. And view up front is amazing. As I told you, the whole look of the car is very, very beautiful because of the big screen and all those ambient lights that they've put. Now time to check out the hood. And surprisingly, not surprisingly actually, इधर दिया हुआ है. There is space in the front to keep things. They've given a space to keep the charger also here. And I guess auxiliary battery को open करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको slide करके आप pop out कर सकते हो. But the space is not big enough. मतलब सिर्फ चार्जिंग केबल या वैसे कुछ छोटी सी चीज़ यहाँ पर रख सकते हो. There's not much you can store here. So what's the final verdict? क्या करना चाहिए? लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? I'm saying 60 lakhs का बजट है, ले लीजिए. Amazing car, like you know, it can give Mercedes and BMW also a run for their money. We have to see the new BMWs in this range अगर कोई आती है तो, क्योंकि अभी तक सब महंगी है. Only Volvo is there in this range right now, and they launched it at 55 lakhs, which is a few lakhs cheaper. Then there are certain things which are in this car which is not there in Volvo, and safety of Volvo is anytime next level. So you be the judge, drive both the cars and let us know which one you are buying. Hope you like the video. Please do like, subscribe and share it with your friends and family and start creating the awareness. Kia is here. Hyundai Ioniq is also coming to India very soon, and even we heard Renault is also working on a new EV to be launched in India. के बारे में भी आपको एक vlog में पता चल जाएगा बहुत जल्द. Hope you like this small walk around. We'll see you in the next one.